There seems to be some big escalation there in Uttar Pradesh right ahead of polls. Akhilesh Yadav, who is now teaming up with RLD chief Jayant Chaudhary, wants to come out with a show of strength. And even as he was taking off to Muzaffarnagar, he alleged that his helicopter wasn't being allowed to take off from Delhi and that the BJP was trying to misuse its power and not allowing his helicopter to take off. Akhilesh further alleges that the SP will take a historic flight to victory. He's tweeted saying that BJP not allowing his helicopter take off is basically a sign of weakness of the BJP as it's all set to face defeat. Now, the government in the meanwhile has refuted Akhilesh's allegations. Government sources say that the chopper was delayed only because of air traffic congestion and refueling of the chopper. They also mentioned that commercial flights are given preference in case of air traffic. Now, just ahead of polls in Punjab, it seems like Sidhu's family feud is out there in the open, causing much embarrassment to Navjot Singh Sidhu. Right? His sister, in fact, came out this morning, spoke to the media, alleging that Navjot Singh Sidhu is a cruel man. She goes on to say that, hitting out at her brother, addressing a press conference, she says Sidhu is cruel. She alleges Sidhu threw her mother and her out of their home in 1986, adding that her mother eventually died in 1989 at a railway station in mysterious circumstances. In fact, Sidhu's NRI sister Suman alleges that Sidhu lied about their parents' separation in the media, and when she went to meet Navjot Sidhu on the same at his Amritsar home, he did not even open the gate to meet her and speak with her. Meanwhile, Sidhu's wife has of course come to Sidhu's rescue, saying that Sidhu's father Bhagwan Singh got married twice. The two sisters were from the first wedlock. ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ और रेलवे स्टेशन पे मर गई गड्डी दी इंतजार करदी लवारस औरत नहीं सी ओ साडी मां सी जिन्हों इन्हें लवारस बनाता किस काम लई पैसे पीछे 1980 से मेरे फादर की डेथ हुई 1986 विच ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੋ ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A person who could not be good to his family cannot be good to anyone. I think you have to hear the press conference. I've been told. Last question. There had been two contenders. His sister has done a press conference today, and I'm ashamed, appalled to hear what all she said about Navjot Sidhu. Meanwhile, in Congress, there seems to be some setback for Priyanka Gandhi and the Congress party as a Badayun candidate has resigned. Farah Naeem has alleged that she was harassed and passed lewd comments at by the district president
Onkar Singh. In fact, she refuses to contest elections, alleging that there were indecent remarks and character assassination at her by the party's district president, Onkar. She's now resigned from the party, saying that initially she was impressed with Priyanka Gandhi's Ladki Hoon Lad Sakti Hoon campaign, but now she's compelled to leave the party due to people like Onkar. She said that she would apprise the party leadership about the entire situation soon. In fact, she also said that she tried her best to speak to Priyanka Gandhi on the same, but never got in touch with her. It was impossible to get in touch with her. That's what she says. Meanwhile, Onkar Singh has denied all the charges, saying that all the charges are baseless, that he never insulted Farah Naeem. However, this comes as a huge embarrassment for the Congress party right ahead of polls in Uttar Pradesh. In fact, earlier on, Congress's poster girl Priyanka Maurya also resigned the party, joined the BJP because she was denied a ticket. क्या हुआ आपके साथ? आपने कांग्रेस रिजाइन कर रहे हो, आप कंटेस्ट करना नहीं चाहते हो। ओनकार के ऊपर आपने आरोप लगाया है कि वो इंडिसेंट बातें करते हैं आपके साथ। क्या हुआ है? ओमकार सिंह मेरे ही साथ नहीं, पूरे बदायूं जिले के साथ एक महिलाओं को अपशब्द टिप्पणी करते हैं। मेरे साथ तो इतनी अपशब्द टिप्पणियां मेरे लिए की हैं कि टिकट की जंग में मैं बहुत आगे थी और आगे हूं और आगे रहूंगी, क्योंकि मैं कांग्रेस संगठन की एक ऐसी महिला हूं जो कांग्रेस का चेहरा है बदायूं जिले की। मुझे बच्चा बड़ा सब, हर जाति, हर बिरादरी मुझे चाहता है, क्योंकि कांग्रेस की मैं बहुत पुरानी नेत्री हूँ। मैंने तूफानों में कांग्रेस के लिए साथ दिया है। कांग्रेस लड़खड़ाई है तो मैंने उसका हाथ थाम के कांग्रेस को खड़ा किया है बदायूं जिले में। और ओमकार सिंह जैसे लोगों की शिकायत इतनी बार हुई है, पूरे जिले के लोगों ने की है, लेकिन ओमकार सिंह नहीं सुधरे। आपने किससे शिकायत की? ओमकार के बारे में आपने किससे शिकायत की? जी, मैंने अध्यक्ष जी से भी की है और प्रियंका गांधी जी से लगातार 4 महीने से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। तो दिल्ली से खबर आती है कि आप लखनऊ वालों को फोन कीजिए, राजकुमार जी को फोन कीजिए, उनके पीए को फोन कीजिए, मेल कीजिए। मैंने हजारों सब मेल किए, फोन किए, लेकिन वो जगह जगह दूसरी जगह बता देते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात होना संभव नहीं लगता है। प्रियंका गांधी जी के पास समय नहीं है कि वो मिल पाए। वहाँ फराह जी, प्रियंका गांधी तो हर तरफ है, वो जमीन पर है, भागदौड़ कर रही है वहां पर यूपी में। आप मिल नहीं पा रहे हो उनसे? वो यूपी में भागदौड़ वहां कर रही है जहाँ विपक्षी कोई सवाल उठाते हैं, उनके घर में पत्थर उठ रहे हैं, उनके घर में, कांग्रेस के घर में महिलाओं के ऊपर अपशब्द टिप्पणियां हो रही हैं। वो अपने घर को नहीं देख पा रही है। जब पहले घर अच्छा होगा तब पड़ोस अच्छा होगा, पड़ोस अच्छा होगा तब मोहल्ला अच्छा होगा, तो आप शहर और जिला उत्तर प्रदेश अच्छा कर सकते। ओमकार सिंह ने इतने अश्लील शब्द, अश्लील टिप्पणियां, टिकट लेने के लिए मुझे एक मुसलमानी महिला कह दिया, मुझे बदायूं से निकलवाने की तरह तरह साजिश की, जबकि वो संगठन के जिला अध्यक्ष थे। लेकिन मैं ओमकार सिंह की छत्रछाया में रहकर चुनाव नहीं लड़ सकती। जब मैं खुद को सुरक्षित नहीं समझती हूँ तो और महिलाओं को सुरक्षा कैसे दे सकती हूँ? प्रियंका गांधी जी के मैं शुक्रगुजार हूँ और शेखोपुर जनता की कि सर्वे के आधार पर मैं टिकट लेकर आई, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगी, ओमकार सिंह जी ने मेरा आघात किया है, और जहाँ ओमकार सिंह जैसे लोग हैं वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। आरोप लगाना आसान काम है, लेकिन प्रमाणिकता दें, कुछ प्रमाणिकता दें। भाई मैंने फोन से कहा हो, किसी कोई फोन रिकॉर्ड दें, कुछ भी करें, लेकिन इस तरीके का आरोप लगा के अक्षम होने का, अक्षमता के नाम पर पार्टी को बदनाम करने के लिए मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि अक्षमता है कि वो फॉर्म भरने तक के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। एक मात्र शक्ति विधान लॉन्च कर देने से महिलाओं की असमत नहीं बच जाएगी। यहाँ पे तो इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वही महिला के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। महिलाओं की बात करती है प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी एक बार ये समझने की कोशिश नहीं करती कि महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही है, किस तरीके के उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आखिर किस हिसाब से प्रियंका गांधी जब अपनी ही पार्टी की महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाएंगी, तो जमीनी स्तर पे जो महिलाओं की वो बात करती है, महिलाओं को सेवाएं देने की बात करती है, वो कैसे पहुंचाएंगी? स्लोगन हैज नाउ बिकम लड़की हूँ पर क्या कांग्रेस के सेक्सिस्ट लड़कों से बच सकती हूँ? बिकॉज दिस इज नॉट एन एबरेशन और अ वन टाइम इंसिडेंट। देयरफॉर this person has left the Congress party. She has said that she will not contest the ticket of the Congress party, and Priyanka Maurya has also left, and every woman in the Congress party somehow feels unsafe with the kind of men that they have to share the platform with. Now, very tragic news coming in from Karnataka. Former Karnataka Chief Minister B.S. Yadav's granddaughter, Saundarya, has been found dead, hanging at her apartment in central Bengaluru. The death is said to be by suicide. Unfortunately, it is said that she was going through postpartum depression.
She was a practicing doctor. She was found hanging herself in the flat. Immediately was taken to a private hospital, but sources say that the doctors couldn't revive her. In fact, she earlier showed signs of postpartum depression post her pregnancy. In fact, Saundarya is 30 years old. Her daughter is said to be very young, close to 9 months. Saundarya's husband rushed back home after he got a call from the maid who had seen Saundarya. She wasn't answering her door. Saundarya kept the baby in one room and hung herself in the other. An unnatural death report has been filed by the police. India Today wants to appeal to anyone that you know who is suffering from depression. Please seek professional help. A professional therapist, of course, can help treat depression issues, prevent one from taking such drastic steps. ಅಲ್ಲ ಏನೋ FIR ಆಗ್ಬೋದು ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ? ಹೌದು, FIR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು FIR ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಸರ್? ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪಾಪ. ಓಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇದೆ ಸರ್? 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ ಮಗು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪಾಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಬಹಳ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಸರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹತ್ರ? ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು? ಇದ್ಲು, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, MD ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಹೌದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೌದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೌದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಂತ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? Now in Tamil Nadu, the fight and debate over the school girl committing suicide at a school in Tanjavur has only escalated. In fact, now there's a lot of speculation on what led to the girl's suicide. Was it religious conversion that really forced her to commit suicide? During a hearing in the Madurai bench of the Madras High Court, the family has raised questions of the Tamil Nadu police's investigation, seeking a CBI report into this matter. Now, this comes as the government council claimed in court that the case is being politicized. In fact, they objected to this. They also objected to the release of videos from the deceased phone, as the matter is currently sub judice. India Today has also accessed the probe report submitted by the district education officer, which states that no complaints were made by students over religious conversion earlier. District education officer's assessment counters the teen's family's claims, as the family now alleges that she was forced to convert to Christianity and that the school did not inform them even as the victim attempted suicide. Of course, the school and the authorities there denying these allegations. அவங்க வந்து கணக்கு உனக்கு பார்க்க சொல்லுவாங்க. ரிலஸ்ட்டாக நான் லேட்டாக எல்லாமே வந்தேன், இப்போ ஒன்றும் புரியலை, நான் அப்புறமா எழுதி தரேன்னு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டாங்க. பரவாயில்ல, எனக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு நம்ம வேலையை பாரு, நான் கரெக்டாக இருந்தாலும் தப்புன்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு 1 மணி நேரம் உட்கார வச்சுருவாங்க. நான் படிக்கிறேன், கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன். என்னால மார்க் கம்மியாக எடுத்ததே இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் படிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சேன். All right, now from Milo, Maria, Versace, Balmain, you have all these brands worn by people like Deepika Padukone, Kylie Jenner, Kendall, Courtney. Well, seems like a lot of our celebrities aping those designs of the West. Many of them wearing the same outfits, but who wore it better? Chaiti Narula decodes that for us.
Milo Maria's spring collection has been totally popularized in India with Deepika Padukone sizzling in this red bodycon dress. This image of Deepika has taken the social media world by storm. The likes, comments, all complimenting Deepika on how hot she looks in this ensemble. Here's the catch though. Kourtney Kardashian donned the same outfit last year. And here is how she carried herself. Subdued lips and naked-looking makeup. The internet is now talking about who looked better. Deepika, who's styled by Shalina Nathani, slayed the sexy, seductive look with deep maroon lips, heavy mascara on false lashes and short hair with beachy waves. Kourtney, on the other hand, we must say looked pale in comparison. Perhaps classier, yes, but definitely subdued in comparison to Deepika. Deepika got her makeup bang on too. With high cheekbones and well-contoured jawline, she had the color pop on the lips that totally helped her stand out in comparison to Kourtney Kardashian. In fact, this is not the first time that Deepika has worn something similar to a Kardashian. It seems like Kendall and Kylie Jenner's dressing sensibilities seem to have Deepika's stylist perennially inspired. Kendall was seen effortlessly flaunting Jambatista Wali collection, a pink number that went viral instantly. The chic and ever so classy Deepika seemed to have given a smashing spin-off to that collection with a fascinator-like headgear and dramatic creation in neon green. Both women looked drop-dead gorgeous. Now take a look at Kylie Jenner's Met Gala outfit. This is a dramatic Versace creation in an ensemble team with lilac hair by Kylie. Now call it coincidence, but Deepika decided to don a cutting-edge Gaurav Gupta design to the IFA Awards. While there may be striking similarities in both the outfits, a closer look and one would realize the cut, material, craftsmanship is vastly different in both. Even the Balmain outfit that Kylie and Deepika wore saw comparisons. And we must say, they're all nailing these looks, one better than the other. In New Delhi, Chaiti Narula for India Today. All right, on the other side, we're going to cut across to our fact check segment. It's now time for our fact check segment. Here, an image that's actually going viral that claims to be the truth, where a West Bengal ex-TMC MLA hoisted a party flag on Republic Day. This was, of course, heavily trolled, but the fact here is that this ex-MLA unfurled an Indian flag first on a different pole. That's it from me here. Stay tuned. On the other side, an exclusive interview with RLD Chief Jat leader Jayant Chaudhary. Preeti bringing us that. Take a look on the other side.